Hi and welcome back to this another IPO review video. I'm Kinjal Parekh और आज हम फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज के IPO के बारे में बात करेंगे। इस कंपनी का IPO 22 नवंबर को ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन और 24 नवंबर को क्लोज होगा। IPO इशू साइज ₹593 करोड़ है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 293 करोड़ विल बी अ फ्रेश इशू एंड द रेस्ट विल बी एन ऑफर फॉर सेल। IPO price band ₹288 to 304 per equity share है with 49 shares per lot। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है, कंपनी के स्ट्रेंथ्स, स्ट्रैटेजीज, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स को भी देखेंगे और समझेंगे। फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज 1976 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। The company is engaged in developing and manufacturing writing instruments. In the overall writing industry, ये company top 3 players में से है with a revenue of ₹9,155.5 million in FY23. They occupy a market share of approximately 9% in the overall writing and creative instrument industry in India as of 31st March 2023. कंपनी का जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है फ्लेयर 45 years से प्रेजेंट है इन द मार्केट। Recently, Flair Writings have also ventured into manufacturing a diverse range of houseware products such as casseroles, bottles, storage containers, baskets, paper bins, etc. Company manufactures and distributes several brands in India and also has partnered with various international brands in writing instruments industry. As of 30th June 2023, they offer over 727 different products and has 11 manufacturing plants in India. मूविंग ऑन, कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिटेल्स को देखते हैं। FY21 में कंपनी का टोटल इनकम 311 करोड़ था। इन FY22 इट वेंट अप टू 587 करोड़ और FY23 में 957 करोड़ का टोटल इनकम कंपनी ने रिकॉर्ड करा। नेट प्रॉफिट को देखें तो FY21 में 0.99 का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड करा। इन FY22 इट वाज 55 करोड़ का नेट प्रॉफिट और FY23 में 118 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड करा। कंपनी के कुछ फ्यूचर की स्ट्रैटेजीज को देखें जो कंपनी आने वाले दिनों में फोकस करेगी, तो इट इंक्लूड्स टू फोकस ऑन ग्रोइंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट रेंज, टू एम्फसाइज ऑन मिड प्रीमियम सेगमेंट एंड प्रीमियम सेगमेंट टू इंक्रीज देयर मार्जिन्स, to continue to increase production capacity and enhance capacity utilization, strengthening presence in key geographies to deepen sales and distribution network and to further strengthen their brands. इस IPO के थ्रू कंपनी जो नेट प्रोसीड्स रेज करेगी, द कंपनी इंटेंड्स टू यूज देम टुवर्ड्स सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज फॉर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, funding various working capital requirements, for prepayments or repayments of certain borrowings and also for other general corporate purposes. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स अबाउट फ्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज IPO। इस कंपनी का IPO 22 से लेकर 24 नवंबर तक ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट दिस IPO चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी तरह IPO से रिलेटेड सारे अपडेट्स के लिए मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू नेवर मिस आउट ऑन एनी ऑफ आवर फ्यूचर वीडियोस। I hope आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। If you have any doubts or queries, then please leave them in the comment section below and we will get back to you. Thank you and stay tuned. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.